समुद्र व्यापार का केंद्र यानी ग्लोबल ट्रेड हब बनाने में मदद करेगा और भारत की निर्यात क्षमताओं को यानी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को दोगुना करेगा। इस परियोजना से 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिल ऑफ लैंडिंग बिल 1856 के कानून का आधुनिकीकरण किया गया है। मैं अब बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 के विषय पर यानी 25 के विषय पर आता हूं, जो 1886 के पुराने कानून को हटाकर एक आधुनिक विधेयक लाने की दिशा में कदम है। ये भारत की व्यापारी सामुद्रिक व्यापार प्रणाली को दुनिया के बेहतरीन मानकों के अनुसार विकसित करेगा। सभापति महोदय, बिल ऑफ लैंडिंग का कानूनी जो ढांचा है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शिपर और मालवाहक के बीच अनुबंध को प्रमाणित करता है। ये माल की स्वामित्व यानी हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दायित्व एंड लायबिलिटी को स्पष्ट करता है। इसका परिवर्तन का अधिकार है, राइट ऑफ ट्रांसफर। विधेयक में ये प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता और तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी जिसे स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है उस सभी माल से संबंधित अधिकार प्राप्त करेगा, यानी ईजीएस हो जाएगा। बिल ऑफ लैंडिंग का निर्णायक प्रमाण यानी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कार्गो विधेयक स्पष्ट करता है कि यह बिल ऑफ लैंडिंग में दर्ज दस्तावेज निर्णायक होगा। यानी अभी कई सदस्यों ने भी कहा कि यहाँ जो रेट जो कुछ होगा तो उसके ऊपर अपने दस्तावेज जो अभी ये बिल है वो उसके ऊपर निर्णायक होगा। ये इसके अंदर कानून के अंदर ये बिल के अंदर इसका स्पष्टीकरण किया है। केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति इसके अंदर है। सरकार को यह अधिकार होगा कि ये विधेयक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इस विधेयक का सकारात्मक प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ द बिल यानी नौकावाहन व्यापार शिपिंग ट्रेड को आसान बनाएगा, माल ढुलाई को यानी ट्रांसपोर्टिंग की कार्गो हैंडलिंग को बढ़ोतरी देगा, लॉजिस्टिक सेंटर को मजबूती मिलेगी, निर्यात को एक्सपोर्ट और व्यापारी टेंडर्स के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर सकता है। मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से भारत में समुद्री व्यापार का विकास महत्व बताना चाहता हूं कि 2024 में भारत के प्रमुख बंदरों में कार्गो हैंडलिंग की क्षमता यानी मात्र 800 MTPA की जो थी, जो मार्च 2024 तक 1400 MTPA हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। 98 पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पूरे हुए गए जिनकी लागत 32,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजना का वार्षिक पोर्ट क्षमता 230 MTPA है, यानी उसमें वृद्धि हो गई है। इनलैंड वाटरवे पर माल ढुलाई 2014 में 18.1 MMT थी, जो 2024 में 133.03 MMT हो गई है। लगभग 7 गुना बढ़ोतरी आई है, समृद्धि आई है, वृद्धि आई है। क्रूज भारत मिशन को मुंबई से लॉन्च किया गया, जिसमें भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, जिसमें मेरी कई मांगे है, जिस मांगों में मुंबई में क्रूज भारत मिशन का त्वरित विकास होना बहुत जरूरी है। अभी कई सदस्यों ने कहा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वो भी उसका सशक्तिकरण और अच्छे से होना चाहिए। मुंबई को क्रूज टूरिज्म को हब बनाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द इस मिशन को विस्तृत रूप देना चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। उसमें दूसरी मांग है, जो मेरा एरिया आता है नॉर्थ वेस्ट मुंबई में, वहां वर्सावा करके एरिया इलाका है, समुद्र के बाजू का इलाका है, उस वर्सावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। वर्षा और उसके जुड़े तटीय क्षेत्रों में जलमार्गों के माध्यम से मुंबई से जोड़ने के लिए वर्सावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मैंने कहा था कि वर्सावा जेटी का निर्माण जितने जल्द हो सके उतना, माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे मिला भी था कि वर्सावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। मुंबई और कोकण के बीच जलमार्ग की भी आवश्यकता है, जो सालों से लोगों ने मांग की है। कोकण के किसानों और व्यापारी के लिए, विशेषकर फल और सब्जी उत्पादनों के लिए ये बेहद आवश्यक है कि जिनके उत्पादन जलमार्ग के माध्यम से मुंबई तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। अगर मुंबई और कोकण के बीच वाटरवे विकसित किया जाए
तो खराब होने वाले सामान को जल्दी व सस्ते पहुंचाना जा सकता है। इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट की वृद्धि हो जानी चाहिए। इससे कोकण के किसानों का सीधा लाभ मिलेगा और उसकी आय में वृद्धि होगी। मुंबई, कोकण और अन्य क्षेत्रों में जलमार्ग एवं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित करने की जरूरत है। ये विधेयक भारत की समृद्धि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विश्वसनीय बनाने के लिए एक बड़ा कदम, लेकिन इसके साथ हमें पतन और जल मार्ग के आधारभूत ढांचे को भी सुधार लाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। बिल ऑफ लैंडिंग 24 हमारे व्यापारियों उद्योगपति का सुरक्षा और पारदर्शिता देंगी। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगी और भारत को समृद्धि और लॉजिस्टिक का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री भास्कर भगाड़े जी। अध्यक्ष महोदय, बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयक 2024 वरती मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो। हे बिल बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयक 2024 हे भारतीय बिल ऑफ लेंडिंग अधिनियम 1856 निरस्त करून शिपिंग आणि लॉजिस्टिक आणि समुद्री व्यापार प्रक्रियांना अधिक आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणलं गेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये मोठी समुद्र किनारपट्टी आहे। या किनारपट्टीवरती अनेक बंदरं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये सुद्धा किंवा किल्ले असतील, बंदरं असतील बांधण्यात आली। माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या नावाने स्थापन झालेलं JNPT बंदर असेल किंवा आत्ताच नव्याने महाराष्ट्रामध्ये पालघर या ठिकाणी वाढवण बंदर होतंय। हे बंदर आज जरी होत असेल परंतु त्याच्या पाठीमागे सगळ्याच शासनकर्त्यांचं फार मोठं योगदान आहे आणि या माध्यमातून परदेशामध्ये आयात निर्यात मोठ्या प्रमाणावरती होणार आहे। हे जे विधेयक आज आणलं जातंय हे फक्त एक सुधारणा नसून त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता या निर्माण होते। या विधेयकाने व्यापार सुलभ होण्याऐवजी काही महत्त्वाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे। यामध्ये विधेयकामध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेंडिंगला पूर्णपणे कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली आहे, परंतु यामुळे ग्रामीण भागामधील शेतकरी असतील, छोटे व्यापारी असतील, शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक उद्योग यांना अडचणी येऊ शकतात। भारतातील अनेक भागामध्ये अद्याप डिजिटल पायाभूत सुविधा नाहीत आणि त्यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी हे फायदेशीर असलं तरी लहान व्यापार आणि शेतकऱ्यांसाठी हे बिल अडचणीचं ठरू शकते। त्याचप्रमाणे आपल्या देशातील इंटरनेट सुविधा सायबर सुरक्षिततेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या नाही। जर डेटा लीक किंवा सायबर हल्ला झाला तर व्यापारिक व्यवहारांची सुरक्षितता धोक्यामध्ये येऊ शकते। आंतरराष्ट्रीय शिपिंग नियमांशी हे विधेयक मेळ बसताना दिसत नाही आणि यामुळे व्यापार करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात। त्यातून भारतीय शिपिंग कंपन्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं। विधेयकातील नियमामध्ये व्यवहार पारदर्शक होईल असे भासवलं जात असलं तरी व्यवहार मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरतील असं मला वाटतं। छोट्या व मध्यम व्यापारासाठी हा कायदा प्रतिकूल ठरू शकतो, कारण अनेक प्रक्रिया केवळ डिजिटल असल्यामुळे ते केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी सोयीस्कर होतील। सरकारने यामध्ये लहान आणि मध्यम उद्योजकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करायला हव्यात, त्या केलेल्या दिसत नाही। भारतीय शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र अद्याप आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या पातळीवर पोहोचलेलं नाही। युरोप, अमेरिका यासारख्या देशांमध्ये डिजिटल व्यवहारासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, परंतु भारतातील बहुतेक लहान बंदरं असतील किंवा मालवाहतूक कंपन्या असतील अद्याप या प्रणालीसाठी सज्ज झालेल्या दिसत नाही आणि म्हणून सरकारने प्रथम देशांतर्गत पायाभूत सुविधा किंवा लॉजिस्टिक या बाबतीत सुधारणा करून नंतर आंतरराष्ट्रीय मानकांचं अनुकरण करावं असं मला वाटतं। आपला देश हा कृषीप्रधान देश असून माझ्या महाराष्ट्र राज्यातून विशेषतः नाशिक असेल, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाची निर्यात होते, परंतु वारंवार बदलणाऱ्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो। निर्यात धोरणामध्ये दीर्घकालीन स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव निश्चित केला गेला पाहिजे। माझ्या दिंडोरी लोकसभा किंवा नाशिक जिल्ह्यामधून कांदे असतील, द्राक्ष असतील यांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावरती घेतलं जातं, परंतु वारंवार निर्यात बंदी केली जाते आणि त्याचा फटका
किंवा परदेशी देशांना बसतो. शेतकरी सातत्याने कांद्यावरील निर्यात शुल्क माफ करावं, पाठीमागे 40% निर्यात शुल्क होतं ते 20% केलं. आजही माझ्या मतदारसंघामध्ये लासलगाव ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा उत्पादक बाजारपेठ आहे. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सकाळी कांद्यांचे लिलाव बंद करून निर्यात शुल्क 0% करावे अशा प्रकारची मागणी केली आणि त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावरती या माध्यमातून नुकसान होतंय. साखर आणि इथेनॉलच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सरकारची अस्थिर धोरणं, त्यामुळे हा उद्योग एक संकटात आलेला आहे. एकीकडे साखर निर्यात बंदी केली जाते, दुसरीकडे इथेनॉल निर्मितीला बंद केलं जातं आणि आयात करून परदेशातून साखर आयात केली जाते. ह्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत. त्याचबरोबर मी सरकारला या निमित्ताने विनंती करतो की शासनाकडे कृषी असेल, महसूल यंत्रणा आहे किंवा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यामध्ये कोणत्या पिकाची लागण झाली, त्याचं उत्पादन किती होणार, देशाची गरज किती आहे, त्याचप्रमाणे उत्पादन किती जास्त झालंय किंवा किती कमी होणार, किती निर्यात करावं लागेल, किती आयात करावं लागेल याचा विचार करून आयात निर्यात धोरण ठरवावे अशा प्रकारची अपेक्षा मी या निमित्ताने आपल्याकडे व्यक्त करतो. आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये निफाड या ठिकाणी डायपोर्ट होतोय, परंतु तो प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे. एका बाजूला वाढवण बंदर होत आहे, दुसऱ्या बाजूला माझ्या मतदारसंघामध्ये निफाड इथे डायपोर्ट होतोय, परंतु त्यासाठी ज्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून तो डायपोर्ट एका बाजूला वाढवण बंदर होतोय आणि दुसऱ्या बाजूला हा डायपोर्ट जर झाला तर माझ्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मग कांदा असेल, द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल किंवा विविध शेतीमाल निर्यात करण्यास मोठ्या प्रकारे मदत होणार आहे. निफाड डायपोर्ट हा रेल्वेद्वारे वाढवण बंदराला जोडला जावा आणि वाढवण बंदराला जोडणारे जी कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांद्वारे ती वाढवली गेली. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी वाढवण बंदराच्या बाबतीमध्ये त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या किंवा मच्छीमार लोकांच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत त्यामध्ये लक्ष घालून मदत करावी अशा प्रकारची मागणी मी या ठिकाणी या निमित्ताने करतो. हे जे विधेयक आहे हे केवळ एक पोकळ सुधारणा आहे असं मला वाटतं. याने केवळ फक्त मोठ्या कंपन्यांना फायदा मिळणार असून लहान व्यापारी आणि शेतकरी मागे पडतील आणि म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब चांगला असला तरी त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा आणि सुविधा विकसित केल्याशिवाय त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्यात धोरणामध्ये ठोस सुधारणा करण्यात आल्या नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी, कृषी जिल्ह्यांसाठी स्पष्ट धोरण आखून निर्यातीला बळ देणारे उपाय करावेत. निर्यातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, शीतगृहे, गोदामे यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि सरकारने शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस योजना आणाव्यात. त्यामुळे ग्रामीण किंवा छोट्या शहरातील शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. फक्त मोठ्या उद्योगपतींसाठी या विधेयकाचा फायदा होणार नाही याचा सरकारने पुनर्विचार करावा अशी विनंती मी आपल्याला या वतीने करतो. धन्यवाद. धन्यवाद जी. माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर बिरोतो फर्नांडिस जी. Thank you, Speaker, sir. I would like to thank my party leadership for giving an opportunity to speak on this very important bill. Sir, this Bill of Lading 2024 was introduced on August 9, 2024. It seeks to replace the Indian Bills of Lading Act 1856. Now, the Act provides a legal framework for issuance of bills of lading. A bill of lading refers to a document issued by a freight carrier to a shipper. It contains details such as the type, quantity, condition, and destination of goods being carried. Now, the Act states that a bill of lading is conclusive evidence of goods on board. It grants following persons all rights of suit and liabilities regarding the goods. A, the receiver as per the bill of lading. Second, any third party to whom the receiver may transfer the ownership of goods. Sir, when we are discussing the bill of lading, it is but necessary that we get into a discussion of shipping and shipping related matters because the entire issue is related to shipping. In this context, I suggest the government should facilitate
to modernize the shipbuilding industry in India, as we have huge potential to compete the shipbuilding industry in the world with the global industry of shipping. Now, when we speak of shipping, the name that pops up is the Shipping Corporation of India. The Shipping Corporation of India has played a huge role in contributing towards India's economy, and both during peacetime and during hostilities. But provisions in this bill makes one wonder what the real intention is by bringing this bill. Has the government involved all the stakeholders in formulating the bill? Or is it to dilute the stake of Shipping Corporation of India? At first glance, it seems that the bill is to carry forward the legacy of this government to hand over every aspect of our economy to their most favored businessmen. It's not a mere allegation, but because we know who it is. Now, there are certain factors that I would like to suggest to the government when the government is calculating the impact on the shipping industry by trying to bring this bill. Some of the related problems plaguing the shipping industry are container shortage, surge in freight rate and shipping cost, shipping delays at the ports, and turnarounds at the ports. Now, some of the major problems are at customs and immigration. Complex documentation, inaccurate or incomplete paperwork, goods misclassification, valuation issues, delays due to strict regulations, potential for corruption, lack of transparency in the process, and difficulties with classifying restricted or prohibited items, often leading to significant delays in import and export shipments. Key points about custom clearance issues in India at the ports are documentation challenges, missing or incorrect information on customs declaration, invoices, and other required documents that can cause delays. Incorrect classifying goods can lead to incorrect duty calculations and clearance issues. Valuation disputes. Disputes over the assessed value of imported goods can lead to delays and additional charges. Regulatory barriers. Complex system of import and export regulations, including restrictions on certain items which can be difficult to navigate. Bureaucratic hurdles. The customs clearance process can be lengthy and involve multiple approvals leading to delays. In some cases, custom officials may demand bribes to expedite the clearances of goods. So this bill of lading has to have provisions to ensure such practices are not allowed at the customs or at clearance places at the port. Lack of transparency. Importers may not have clear information on duty rates and other custom requirements, creating uncertainty. Technology issues. Glitches in the electronic customs clearance system can further hamper the process. Sir, recently, when we speak about shipping industry, the government has formed a 12-member panel to advise the government on the national shipbuilding mission. But sadly and surprisingly, why are the Indian shipbuilding designers not placed on the panel? Our shipbuilders have done tremendous progress and contributed in the shipbuilding industry in a big way. Some are involved in designs of corvettes, frigates, destroyers, passenger vessels, but none of them have been included in this particular panel. They are not only not included, but here we come to know that people who are nowhere connected with it are on the panel. I smell a rat because it looks like an entire exercise which may finally end up in breaking a Shipping Corporation of India. And who will gain from that but the most favored businessman friend of the government? Sir, while presenting the budget, the Honorable Finance Minister announced a 25,000 crore maritime development fund, a revamped shipping building
financial assistance policy to address cost disadvantages faced by Indian yards. A credit note scheme for shipbreaking in Indian yards to promote circular economy and infrastructure status to large ships above a specified size were also announced. Today, India holds less than 1% of the global shipbuilding market, but aims to break into top 10 ranking by 2030 and top 5 by 2047. Why not? We have to. But with such backward-looking provision, are we going to break into the top 10? Sir, coming to my state of Goa, everybody knows we are situated on the west coast of the country. For centuries, there was sea trade that has occurred, taken place from foreign countries into Goa, and the shipping industry has prospered. The thrust of the government should be also to ensure that the shipping lines are exploited to the maximum so that it benefits not only the state but also the country in terms of economy. More trade, more business. Goa, unfortunately, was ruled for 450 years by a colonial power, again which came through the sea route. And as irony would be, today we are again become slaves of a trade which has come by sea, where the coal is being brought from Australia, and when it comes to the Mormugao Port Trust, which is now Mormugao Port Authority, again the coal has to go to other states like Maharashtra and Karnataka. So they are expanding tracks, they are expanding roads, and in the bargain, the beautiful state of Goa is getting destroyed. To the extent, a few days back, even the iconic, most revered temple of Lord Kapreshwar was demolished by authorities to facilitate this expansion. For what? And people who try to save the temple have been booked. Even yesterday, sir, for facilitating this coal trade, when they were trying to expand the railway tracks, even the sarpanch, a lady sarpanch, has been booked by the authorities. Even the local authorities have become agents of the central agency to suppress. So I request you, sir, this bill that has been introduced, let us use it for the benefit of all the states and the country, instead of using it for certain trade which is going to destroy certain places like the way my state of Goa is being destroyed. Thank you, sir. Thank you, honourable member. माननीय सदस्य श्री अभिजीत गंगोपाध्याय जी. I thank my leader Narendramodi ji, and also I thank Honourable Speaker while speaking in support of this bill. The bill, in the objects of the bill, what has been stated by the Minister, no, it is there. For ease of business, and for giving some directions to the persons involved in the business, which will take India at least 50 years ago. 50 years preceded from this time today by use of this bill. Now, one of the respected members were talking about sending some some goods were indulged in water, having some furnace oil, etc., and nobody knew who was the owner of the goods. Here, without giving any
blow to the earlier bill, which has been repealed by this act. Without giving any blow, it has been stated clearly that the consignee would be accepted as the owner of the goods, where the property in the goods would transfer to the consignee. It is a deeming provision. It is a fiction of law that while before this, in the bill of lading, the consignor and consignee was mentioned, and it was the consignor who was taken as the owner of the goods. Here, by using one legal fiction, it has been done that the property in the goods means the ownership of the goods will be deemed to have been transferred to the shipper. That is the owner of the ship through which the good was being sent and also the consignee to whom it has been sent. The result, suppose 1,000-ton smuggled coal from West Bengal, is transported by ship from Bengal to some other country outside India, and if it is caught by any of the Navy or any of the water monitoring authority, then the first question would be, who sent this 1,000 tons of coal? This coal is coming to my mouth because of the reason that there is a coal scam, huge coal scam in West Bengal. Who is the owner of this coal? Who is the owner of this coal? Now nobody will be able to find it out. Who is the owner of the coal? Here it has been done that it is deemed, it will be considered, it will be accepted that the person who is shipping the coal is the owner of the coal. That's the advantage which has been created by this bill in modern terms instead of a bill of 1800. A bill which was framed in 1800. A new bill was required, is always required to come to bring the new terms in the Act. Here another very important is Section 2, where the liabilities also, not only the rights, liabilities also has been fastened upon the shipper, that is the consignee or the person who is transporting the good. Bill of lading is actually a paper, a document which shows that who is sending the goods, what is the amount, where it is being sent, and to whom it is being sent. Bill of lading is a very simple thing. Bill of lading, some informations are given. Now it was always considered that the person who is sending the bill, he is the owner. Now in this bill it has been stated at the very outset, that is the object and reasons, to transfer of rights of suit and all liabilities to the consignee. If something happens to the good, who would sue? The person who has some insurable interest in the good. Why I am saying insurable interest? Because anything which is to be shipped is bound to be insured. So the person who has some insurable interest in the goods will sue. Now if the person is not available, if the shipper says that yes, somebody booked it, if the consignee said yes, I sent some money, but the person who sent it is never found, so there will not be any suit. But in the meantime, the shipper and the consignee has already been faced, has already been accounted for huge loss.
So in this bill, it is stated that who will extract the money, that is the damages, caused due to some problems which has been shipped in the goods, and not only the goods, some goods which is mentioned in the bill of lading but has not been given in the ship. Here ship, the word ship includes also any carriage by way, by road. Shipping does not always mean that it has to be shipped by a ship. Shipping is a term of insurance which covers also the carriage of goods by transporters through road. So, here if something is required to be done in the court of law, the person to whom the good has been transferred for shipment, not the ownership, to the consignee, not the ownership, he can also sue the person who is liable for the damages. This particular provision, along with the opening up of the whole thing, that is Section 5, proposed Section 5, the central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of this Act. It has an opening to the national trade and also the international trade. For doing something, if some direction is required, a person is to go to the court of law, where a litigation will continue for 20 years. Hereas the government has taken the responsibility of giving directions. If the direction is bad, court has also already vested with the power by Constitution of India to declare it as bad. So whether it is a bad decision or good decision, I am not on that. I am on the question whether the government can issue certain directions for the betterment of the transport by sea or by road. The bill of lading is not only used only in ship, it is also used in transport and also in multimodal transport act. Under multimodal, we have one multimodal transport act which shows that some goods will start, say, from Calcutta to Paradip, from Paradip to some other country, from that country, from the port to some factory. For the whole thing, one bill of lading can be used. This is said multimodal transport. So this multimodal transport will also come within the meaning of this act. So while supporting the bill, I say that it has opened up an area for our country which is very progressive, which will bring India at least 50 years ahead of our time. Thanks to all. I conclude. Thank you, Honourable Member. Honourable Member, M. Gurumurthy ji. Thank you, Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on the Bills of Lading Bill 2024. Sir, the new bill simplifies and improves the efficiency in the way we do business in terms of maritime trade, sir. Honorable Chairman, sir, I will call out few strengths and positives of the bill. First one, replacing the old 1856 Act is a big step towards modernizing and standardizing the trade in making India complete with global markets and standards. And second point, sir, this bill brings clarity in the supply chain and in protecting the interest of shippers, freight carriers, and third-party buyers
reducing any potential disputes, sir. And third point, sir, as India becomes fifth largest economy of the world, and in the view of the strides that we are making in Make in India movement, truly complements such changes to the bill, sir. Chairman, sir, as a representative from Andhra Pradesh, a state which has second longest coastline in India, I know how important this law is for strengthening India's maritime trade. Sir, in this time, I want to recall, under the leadership of our ex-CM Sri Y. Jagannath Reddy Garu, Andhra Pradesh has taken several steps to boost the blue economy and seen a substantial growth. To refer briefly, sir, building 3 new greenfield ports at Bhavanapadu, Machilipatnam and Ramayapatnam, and developing 9 fishing harbors to support fishermen, exports and substantial practices, sir. These harbors increase fishing and prawn catching by approximately 4.5 lakh tons, contributing 9,000 crores gross value added, sir, and providing employment of 1 lakh fishermen community, sir. Chairman, sir, I see there is a big necessity and action on the hour, sir. As outlined Part 10, 13th Schedule in Infrastructure and Special Economic Measures of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, the Government of India committed to develop of a new major port at Duggarajpatnam in Tirupati Parliamentary Constituency, sir. Despite this provision, the project initiation has not yet commenced, sir. While that was expected to kick off by 2018 itself as a phase 1, sir. Chairman, sir, I urge the government to expedite the development of shipbuilding and port infrastructure at Duggarajpatnam in Tirupati Parliamentary segment, sir. This project holds immense potential and regional economic growth and national maritime advantage, sir. Honorable Chairman, sir, I would like to call out few challenges of this bill, sir. First one, although the bill recognizes the rights of bona fide holders of bills of lading, it does not transferring bills giving support and encouragement to the small traders in propelling the maritime economy, sir. And second point, sir, the dispute resolutions are not heavily discussed, which could lead to unpleasant scenarios between consignees, shippers and the liability, sir. Rights under the bill, sir. And third point is, sir, I would like to call out for training programs to build the capacity formation that is needed in terms of infra, coordination and seamless coordination, sir. Thank you, sir. Finally, we support this bill, sir. Thank you, Honourable Member. माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी. धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे लैंडिंग बिल पे अपनी बात रखने का मौका दिया. सभापति जी, 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया. तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया है. नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है. अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे. ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट
आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से। वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरे लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य जी प्रदीप पानीग्राही जी। Speaker, Honorable Chairman, sir, I support this bill introduced by Honorable Minister Port and Shipping, Sri Sonovalji ji. This bill is very important as far as the international trade and India's position as a global player, developing our economy in a national and global field. This bill replacing the old bill, which is outdated in nature, and to comply our international norms and protecting our national interest in modern time. This is a bill which is giving an ample opportunity with new sections, new simplifying the structure and bringing the many changes in old bill to make it a visible to in port sector to giving ample opportunities. As the different section of this bill also reflects and the many speakers on opposition side criticizing this bill, but I see this bill is a very important bill as far as the compliance with international obligations, streamlining regulations, broadening eligibility for ship ownership, establishing maritime utility framework, streamlining administrative framework, including integrating coastal and inland waterways, simplifying regulations. All these are very important factors that was covered under this bill. As far as the under this bill, as Odisha is also affected under this bill, Odisha's coastline is around 480 kilometers. So we need the honorable request the honorable minister to focus Odisha, as the Prime Minister is already focusing in the Purbodaya as a East policy. Odisha plays a major role in coming in an area, and Prime Minister regular visit to the state and the double engine sarkar that works in the center and the state. This bill also play a major role. I request the Honorable Minister to focus developing new ports, particularly in Astaranga, in Puri district, and Bahuda at Ganjam, and Palur in Chhatrapur of Ganjam district. This will do a wonderful job as far as the economic growth of Odisha is concerned. As the communication is a very important part of the nation, as far as the seaport is concerned, or the airport is concerned, or the railways are concerned, or the roads are concerned. So in modern days, the communication play a major role. I hope this bill brings in a major changes in as far as the maritime trade is concerned. I hope the Honorable Minister during this bill, passing of the bill, he will focus on Odisha to bring new ports with new provisions to make a Viksit Bharat agenda of Honorable Prime Minister 2047, and Odisha will play a major role by providing a growth of a contribution to the national growth
as far as economy is concerned. Thank you for giving me an opportunity in this bill. Thank you. Sri Sachidanandan, Honorable Member Sachidanandan. Good evening, Speaker, sir. The exports from India have come to a standstill as shipping companies hiked shipping charges nearly 6 times. Various sectors such as jute, seafood, food processing and species have been disrupted. Items are all in stock. Due to this, hundreds of people have lost their jobs. It is said that the reason for the increase in price is the shortage of containers. Higher import costs lead to higher prices for goods ranging from toys to computers. Exporters say that the union government is doing nothing to tackle the crisis. Before COVID, a container that was sent abroad for rupees 2 lakh now costs up to rupees 12 lakh. The fare from Kochi to Shanghai, China was $1,200 to $1,500. China was now it was now risen to between $5,000 to $6,000. The Kochi-Dubai container fare has been increased from $300 to $350 to $1,000, and the Kochi-Colombo fare has been increased to $1,500 to $2,000. Due to the COVID lockdown, shipping containers are stuck at ports due to the shortage of containers. The Kerala Exporters Association said that the shortage of containers has increased due to reduced the imports from China. Due to the reduced imports from China, the shipping companies are reluctant to deliver containers to Kochi to higher profits at other ports. So, the lading bill amended as to control the shipping charges. Thank you very much, sir. It looks like. Yes. What one? Raja Ram Singh, Honorable Member. सभापति महोदय, ये शिपिंग बिल बात तो की जा रही है कि 1856 के हम कानून को बदल रहे हैं इसके जरिए, लेकिन दूसरा सच ये है जो बड़ा सच है कि जैसे रेलवे और विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है, इस शिपिंग बिल के जरिए भी प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अभी माननीय सदस्य ने भाड़ा वृद्धि की बात कही, तो अंग्रेजी विरोध का नारा है, लेकिन कंपनीकरण की कोशिश है इस शिपिंग बिल के जरिए भी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। एक दो बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। सेतु समुद्रम का किस्सा तब पढ़ा था जब सांसद यहां नहीं थे। एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि सेतु समुद्रम से बड़े जहाजों को ले जाना है और उसके लिए भारत सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सेतु समुद्रम कुछ भी नहीं था, वो लंका के बीच में वो पहाड़ बना हुआ है, प्राकृतिक बनावट है, और राम रावण युद्ध नहीं हुआ था। तो एक तरफ राम मंदिर पर राजनीति की जाती है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट हित जहां टकराते हैं वहां पर ये एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सा अपॉर्चुनिज्म है? और दूसरी बात, एक समय देश में दाल का संकट हुआ था और उस समय अफ्रीकन कंट्रीज में बड़े कॉरपोरेट घरानों ने जमीन खरीदी कि इस पर दाल उत्पादन होगा,
और अडानी के जहाज से वो दाल भारत आएगा। तो यह जो फेयर का एक डील है, इसको इस बिल के जरिए और सुगम बनाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलर काम है, नियमित रूप से नियमित बहालियों को छोड़ करके अब कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की बहाली हो रही है और उनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जा रहा है, उस पर खटवाया जा रहा है दिन रात, जबकि वो रेगुलर काम है। और इस पक्ष पर बिल में कोई चर्चा नहीं है कि जो शिप बनाते हैं, शिप चलाते हैं, शिप पर काम करते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जीवन स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, और उनको रेगुलर बहाली अगर रेगुलर काम के लिए पहले था तो आज उसको क्यों खत्म किया जा रहा है और उसको भी उचित मानदेय या वेतन नहीं दिया जा रहा है, न उनके जीवन की अच्छी स्थिति है। तो महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। पारादीप बंदरगाह सरकारी है उड़ीसा में, उसके बगल में एक प्राइवेट कंपनी को बंदरगाह देने की कोशिश की गई। उन्होंने उस समय, हालांकि वो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर वापस हुआ वो निर्णय, लेकिन उसमें कोशिश ये थी कि हमारे आयरन ओर को सीधा उस अपने प्राइवेट बंदरगाह से वो अपने देश में ले जाएं और अपने यहाँ आयरन बना करके और वो सेल करें या उसको अपना इस्तेमाल में लाएं। तो ये जो धीरे धीरे ये कोशिश चल रही है, उड़ीसा के, गुजरात की कहानी हम बराबर देख रहे हैं कि प्राइवेट पोर्ट पर किस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रहे हैं, कुछ सीज हो रहा है और बाकी देश के अन्य हिस्सों में जा रहा है, हमारे नौजवानों की सेहत खराब कर रहा है। तो इन तमाम पक्षों पर इस बिल में एक बात होनी चाहिए कि उसके ऑलराउंड जो असर हैं, जो इरोजन के हैं, पर्यावरण संकट के हैं, उन सारे पक्षों पर इस बिल में चर्चा होनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री N.K. Brahmachandran. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Bills of Lading Bill 2024. Sir, I was surprised to hear the arguments and observations from the Treasury benches that it is going to make drastic changes in the maritime sector because ample business opportunities will be provided after passing of this bill. Sir, there is nothing to oppose or nothing to support in this bill. Rightly, the honourable member has observed in his opening remarks that it is a repeal and reenactment of a pre-independent legislation. But I would like to add two more words to along with this. It is a repeal and reenactment of a pre-independent legislation without any changes and without any reforms to the tune of the time. What is the scope of this legislation? Sir, the pre-independent legislation was Indian Bills of Lading 1856. It is a law that governs the transfer of goods shipped by the sea. It defines the rights and liabilities of carriers and consignees. And I have gone through the Indian Bills of Lading 1856. So the same bill, same provisions, and the contents, everything is the same. Then what is the scope of bringing a new bill without any changes in order to suit with the situation, in order to suit with the new liberalized economic era? Because this bill is enacted in the year 1856. That is 170 years ago, this bill was passed by the British legislature or British India government. And even now, after 170 years, the government of India, led by Honorable Prime Minister Sri Narendramodi ji, and even the Minister, Port Minister also has spoken in his opening remarks that 1,500 obsolete legislations has already been repealed. And we want to decolonize the legislations as in the case of IPC, Criminal Procedure Code and Indian Evidence Act, but copying it in a different form. Nothing else is there. There is no in-depth wisdom is not being put on the legislation. That is the reason by which I am saying there is nothing new so as to oppose or so as to support the bill. Sir, only one new provision has been incorporated in the bill, that is clause 5 of the bill. Sir, what is clause 5 of the bill? The central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out or any of the provisions of the bill.
So other than this, the entire provisions are the same. There are three clauses mainly. Number one is rights under bill in loading west in consignee or endorsee. And the second one is no right of stoppage in transit and right to claim freight against the original shipper or owner. And the third point is regarding the bills of lading in the hands of a consignee is a conclusive evidence of the shipment as against the master. This is the content of the bill 1856 as well as 2025 bill is same provision, same content, nothing is doing. So my pertinent question I would like to ask to the Honorable Minister, you have incorporated a new provision clause 5 that the government of India is empowered to give directions from time to time as it deems necessary, either for all the provisions, for implementing either all the provisions or any of the provisions of the bill. So I would like to know from the Honorable Minister, even if there is no such provision in the bill, a bill passed by the Parliament, Government of India is empowered to give directions so as to implement the provisions of the bill. It is implied. There is no need of an explicit provision in the bill that the government can give directions for the implementation of the provisions of the bill. So what is the purpose of incorporating a new provision clause 5 in the bill? Just to show that we have reformed the bill. That is the only reason why we say new bill has been brought in. Otherwise, you have to come with so many changes. Sir, I have got 5 suggestions. Let me come with these positive, very concrete, positive suggestions. So the number one is the lack of adequate safeguards for Indian exporters and importers. Sir, bills of lading are one of the most essential documents in international trade, as they serve as both the receipt for goods and the title to the goods being shipped. However, the provisions under the bill fails to provide adequate safeguards to Indian exporters and importers, the backbone of the country's trade sector. Sir, exporters who are primarily small and medium-sized business in India often lack the resources of bargaining power to negotiate the terms of international shipping contracts. While the bill introduces several standardization measures, it does not address the challenges faced by the Indian exporters in avoiding fraudulent practices, especially when dealing with the foreign shipping companies and agents. So I suggest a special provision for Indian exporters to have stronger legal recourse in case of disputes involving bill of lading, particularly in relation to foreign shipping companies. This could include establishing a dispute resolution mechanism specifically aimed at protecting the Indian interest. That is the first suggestion. Sir, 5 suggestions. It's very positive suggestions. And the second one is regarding the potential for increased cost of doing business. Sir, the bill, there is a lack of clarity on the regulatory framework that will govern the fees and charges related to bills of lading. The bill potentially opens the door for increased fees and charges associated with the issuance, transfer and issuance, transfer and negotiation of these documents. These costs could place additional financial burden on Indian businesses, particularly the export and import. So my point is that the cost competitiveness is a critical for Indian business to succeed in the global market. So, sir, I suggest a regulatory cap on fees and charges for bills of lading, ensuring that this do not unduly burden the Indian MSMEs. And the third suggestion, sir, regarding the maritime sector and the carriage of goods seized by the sea. There is another bill is also carriage of goods by sea bill. Sir, there are provisions there are contradictory provisions are also there. So I would like to urge upon the minister, kindly go that there shall not be a contradiction with these 2 bills. And the fourth one is very, very, very important suggestion, that is the technological advancements and the digital bills of lading. Sir, this is the most modern era of communication technology, even the artificial intelligence era. Sir, the issue is, it is limited focus is there on the digital transformation of the maritime industry. In an era of rapidly advancing technology, the electronic bills of lading, the use of electronic bills of lading has become the global standard in international trade. Several countries, including major trading nations like United States, Singapore, UK, have already embraced digitalization in the shipping sector. India, however, has lagged behind this area. The bill makes, sir, 1 second. The bill makes only passing mention of the electronic bills of lading and fails to provide a robust framework for their adoption and regulation. The lack of clarity in digital bills of lading could make India's maritime industry less attractive to international shippers and importers who increasingly prefer the speed, security and efficiency of a digital solution. Sir, with these suggestions, I make 2 points, that is regarding the Vizhinjam International Seaport Limited.
there was a commitment on the part of the government of India that after the completion of the Vizhinjam International Seaport Limited, there is an commitment on the part of the government of India that viability gap funding will be provided to the Vizhinjam International Port. But now the government of India is withdrawing from their commitment to provide the VGF. That has to be taken into consideration. And the last point, sir, regarding my constituency, there is a Kollam Port Honorable Minister, Mr. Suresh Gopi is also sitting. He is also from my constituency. He is born and brought from my place, and we studied with me in my college. And he is well aware of this fact. Sir, my point is that is Kollam Port, it has started since long. Unfortunately, it is not been operational. Yes, the government of India clearance has been given. There is a, sir, 1 second. There is a Minikoi to Kollam ship travel possibility is there from Lakshadweep. That may be considered. With these points, I in a way support the bill. Thank you. Sir Nishikant bhai. Taking 3 of my points. धन्यवाद सभापति महोदय। सर, ये बिल देखने में छोटा लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सत सइये के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इसका क्या इम्पैक्ट है? अभी हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में, शायद उसके बारे में वो पूर्णतया समझते नहीं हैं या समझाना नहीं चाहते, या अपोजिशन का जो रोल है सभी बात का विरोध करना, वही विरोध करना चाहते। ये 1876 का एक्ट है, और इस बीच में भारत सरकार ने इस सदन की जानकारी के लिए 1876 के एक्ट के बाद 3 बार इंटरनेशनल कमिटमेंट किया। एक 1921 में जब अंग्रेज यहां थे, ब्रसेल्स का समझौता हुआ और उसने कहा कि लैंडिंग बिल के ड्राफ्ट को हम बदलेंगे। और दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार पहले 1978 में, और फिर 1989 में जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर यह बातें कही कि लैंडिंग के बारे में जो वाहन पत्र है, जिसके बारे में कि लाना ले जाना, सामान कैसे, किसकी डिलीवरी होगी, कौन उसका मालिक होगा, उसके लिए हम एक्ट में संशोधन करेंगे। और 1992 में फाइनली नरसिम्हा राव ने उस एक्ट पर साइन किया। 1921 से लेके आज तक 2025 तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1876 के इस एक्ट को बदलना है। अभी रिपीलमेंट की बात हो रही थी सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए, मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेमचंद्रन जी आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार वाहवाही लेती है कि 1500 बिल उसने पास कर दिए, मतलब रिपील कर दिए, खत्म कर दिए अंग्रेजों के समय के। मैं आपको केवल 1874 का, इस सदन की जानकारी के लिए और इस देश की जानकारी के लिए, 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है। और उन्होंने एक ड्रामेटिक एक्ट बिल बनाया 1874 में, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दुल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? 1876 का एक्ट था, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला। क्या इस देश को यह पता है कि इस तरह के एक्ट हमने बनाए? बांस जो कि प्रत्येक घरों में होता है, वो घास है, उसको हमने वृक्ष बना दिया। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है बांस पर चलती थी। यह भी 150 साल से एक्ट था। क्या इसमें गरीब परेशान नहीं हो रहा था? क्या उसको रिपील नहीं कर देना चाहिए था? ये 2 एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं,
उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। वैसा ही 1876 का एक्ट है। अब आप समझिए कि पूरा, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज ही चर्चा चल रही थी कि हम टैरिफ पर बात करना चाहते हैं। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार, ये लैंडिंग बिल है क्या आखिर? इस साल से लेके पिछले साल, पिछले 4-5 साल में यदि आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। ड्रग्स, हेरोइन ड्रग्स, जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप बायलैटरल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है और चाइना जो है, चाइना से गुड्स नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं सिंगल प्लास्टिक यूज जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने लगा दिया। स्टील सेक्टर में जो डंपिंग यार्ड हमने यहां बना दिया है वो यहां नहीं आना चाहिए। एग्री? हम आपके सारे बात से सहमत हैं कि अमेरिका यदि टैरिफ यदि लगाएगा तो हमारा व्यापार जो है दूसरे जगह बढ़ना चाहिए और उसके लिए अपना देश बनाना चाहिए, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन कभी ये लैंडिंग बिल तो पढ़ लेते कि हमने क्या किया। आज आप समझिए कि आप किसी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ हम अपना व्यापार नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को हम दुश्मन देश मानते हैं और पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार रोक दिया। चाइना के साथ हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं और पूरे चाइना के हालात हैं, हम टेक्सटाइल के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि बढ़ना चाहते हैं आप, तो यदि शिपिंग संघाई पोर्ट से हुआ और संघाई पोर्ट सिंगापुर चला गया, यदि किसी आदमी ने चाइना से टेक्सटाइल को हमारे यहां के लिए भेजा और उसने कहा कि ये सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से नाम बदलकर वो फिर यदि हिंदुस्तान आ जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो तो सिंगापुर है। उसी तरह से ऑयल के बारे में मान लीजिए कि कई एक देशों के साथ हमने, अभी सीरिया को हमने बैन किया हुआ है, लीबिया को हमने बैन किया हुआ है। हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। फर्टिलाइजर का जो जिससे बनता है फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ये यदि आता है तो उसमें कई एक जगह बैन है। तो जो पोर्ट है, कहां से ये कंसाइनी को दिया गया, कहां शिप पर ये लोड हुआ, कितना केजी लोड हुआ, कहां से ये शिप कहां गया, उस शिप से फिर वो भारत में किस तरह से आया, या भारत में जो लोड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी की बहुत बात होती है इस देश में। ब्लैक मनी के बारे में 72-73 का जो रिपोर्ट है और 2012 में इसी सदन में जो ब्लैक मनी पर माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, जो बाद में राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया, व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी जनरेट होने का सबसे बड़ा साधन 85% इस देश का ब्लैक मनी केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है, उसके बारे में कभी सोचा है आपने कि हम यहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए कि टेक्सटाइल भेज रहे हैं और वहां से जो है आर्म्स का हमने ले लिया ऑर्डर कि हम जो है स्टील की फैक्ट्री ला रहे हैं जी, आर्म्स खरीद कर ला रहे हैं जी, या कोई भी चीज ला रहे हैं। इसके बारे में इस देश में 1876 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि ई बिलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होनी चाहिए, प्रेमचंद्रन साहब आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैंडिंग होती है। उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, लैंडिंग का केवल और केवल
2.1% होता है पूरी दुनिया, केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा, वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक? तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, यह समझिए कि सबसे पहले है कि इससे क्या फायदा होगा। पार्टी डिटेल्स मिलेगा कि किसका प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने यह प्रोडक्शन किया है। यदि स्टील आ रहा है, मान लीजिए स्टील सेक्टर को ही लेंगे, तो चाइना की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद आएगा कि उसको इंपोर्ट का लाइसेंस किसको दिया गया, यह दूसरा सवाल है। इंपोर्ट के लाइसेंस के बाद जब वो पोर्ट पहुंचेगा तो पोर्ट में जो है उसको यह बताना पड़ेगा शिप ऑनर को, कि शिप ऑनर को यह बताना पड़ेगा कि इस इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए यह ऑथराइज था, उसने इस शिप पर चढ़ाया। उसके बाद यह जिम्मेवारी जो है शिप ऑनर की हो जाएगी, और शिप ऑनर के बाद हमारे यहां जो इकोनॉमी होती है, जैसे नीरव मोदी का किस्सा हुआ। नीरव मोदी का किस्सा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक की जो गारंटी थी, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके आधार पर कि भारत में कोई सामान आएगा या भारत से कोई सामान जाएगा, तो जो बैंक एलसी खोलता है, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसमें से आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का परेशानी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परेशानी हुआ। यह परेशानी के लिए वो कौन सा आदमी है जिसने कि एलसी मंगवाया है, कौन सा आदमी? जैसे गुजरात के पोर्ट में आप कहते हो कि ड्रग्स पकड़ा गया, ड्रग्स किसने मंगाया? Who knows? Nobody knows. और आप फिर भारत सरकार, तो इसमें लैंडिंग बिल में जो सबसे बड़ा है कि पार्टी का डिटेल्स आएगा, उसकी पूरी चेन आएगी। क्या ये बिल आने की आवश्यकता नहीं थी? दूसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो कहां से कहां गया। आज मैं बताऊं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे यूएस ने कई एक, रूस को बैन कर रखा है। आपको पता है कि रूस से यदि कई एक सामान यदि जाता है, अमेरिका जाता है, वो कैसे जाता है? तो जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, मान लीजिए कि ब्रिटेन उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, सिंगापुर उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, तो रूस से वो सामान जो है शिप होकर चला गया सिंगापुर, चला गया वो यूके, और वहां से जो है वो वापस जो है यूएस के रास्ते में चला जाता है। लेकिन जब हम ये बिल लेकर आएंगे, लैंडिंग बिल आएंगे, तो उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा कि डेस्टिनेशन कहां से ये निकला। ये जो है ये दूसरा है। तीसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो वो वेट नहीं करेगा। एक सीएजी की रिपोर्ट आई कि यूपीए के सरकार के समय कम से कम 50,000 करोड़ रुपया सालाना केवल लॉजिस्टिक और कार्गो वेट में जाता है। आपको पता है कि आज की डेट में कई एक ऐसे पोर्ट होंगे, क्योंकि पोर्ट सेक्टर में कई एक समस्याएं हैं। जैसे कई एक लोगों ने कहा कि राज्यों का सवाल है, राज्यों का इन्फ्रिजमेंट है, राज्यों के पास पोर्ट है। मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी परेशानी होती है कि पता नहीं इस देश में क्या होगा। यहां दो चीजें, मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट कौन है? जो भारत सरकार जिस पोर्ट को बनाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां दादा स्वागत बाबू बैठे हुए हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है, और जो हल्दिया का पोर्ट है वो माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट इसीलिए कि वो भारत सरकार ने बनाया, और हल्दिया का पोर्ट यह है कि राज्य सरकार के सहयोग से बना। मेजर और माइनर पोर्ट का यह फर्क है। माइनर पोर्ट मेजर पोर्ट से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कई एक माइनर पोर्ट ऐसे हैं जिनको कि मेजर पोर्ट से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो माइनर पोर्ट ही पड़ा है। लेकिन डिफिनेशन क्या है? जो केंद्र बनाएगी वो मेजर पोर्ट है, जो राज्य बनाएगी वो माइनर पोर्ट है, और उसका जो लेजिस्लेशन है वो भारत सरकार एक का तय करेगी, एक का राज्य सरकार तय करेगी। जैसे अरविंद सावंत जी मैरीटाइम बोर्ड की बात कर रहे थे। लेकिन जो कस्टम एक्साइज है, जो 5 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाने और अनजाने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत सरकार का ही अधिकार है। भारत सरकार ही उन चीजों को देखेगी। भारत सरकार ही, मान लीजिए कि कई एक ऐसे हैं, पनामा कैनाल से लेकर स्वेज कैनाल तक हमेशा इंटरनेशनल लड़ाई होती रहती है। इंटरनेशनल लड़ाई होती है तो कौन सा कार्गो कहां जा रहा है, कहां आएगा, यह डिटर्मिनेशन कवर करेगा। भारत सरकार जो है उसको सिक्योरिटी कैसे देगी।
तो इस आधार पर जो वेटिंग है, कई एक कार्गो जो है कई एक पोर्ट पर हमेशा जो वेट करते रहते हैं, इस एक्ट के बाद, लेडिंग एक्ट के बाद उसमें एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं केवल 2-4 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि बोलने वाले बहुत लोग नहीं थे, इसीलिए। इसके बाद टर्म्स ऑफ पेमेंट, मैंने जैसे कहा कि एलसी यदि खोलते हैं, कई एक बैंकों के साथ जो है कि सामान यहां आ जाता है और सामान लेने को तैयार होते हैं, या क्वालिटी जो है उसकी इतनी खराब होती है, जैसे हम ही यहां से भेजते हैं तो मान लीजिए यूएस किसी चीज को रोक देता है, सिंगापुर किसी चीज को रोक देता है, यूरोप किसी चीज को रोक देता है कि हम उस तरह का नहीं कर सकते हैं, तो जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो पहले से निर्धारित होगा। वो सीपर पर, कंसाइनी पर जो है इस लेडिंग एक्ट के बाद, क्योंकि ये बिल जो है वो इंटरनेशनल एक्ट 1878 का जो हमने साइन किया है उसके आधार पर ये बना है, तो वो तय हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें डेवलपमेंट है कि जो बिलिंग है, बिलिंग जिनके साथ हमारे आज के डेट में क्या हुआ है कि 3-4 एग्रीमेंट भारत सरकार ने लगातार किए। एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट हमने स्टार्ट किया है कि एक देश के साथ दूसरे देश का क्या रिलेशन, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा सभापति महोदय केवल। तो जो उसका जो बायलैटरल है, बायलैटरल में हमने मान लीजिए कि किसी के साथ टैरिफ में किसी को कंसेशन दिया या किसी के साथ हमने सहयोग किया, जैसे नेपाल हमारे साथ है, भूटान हमारे साथ है, हम इंडोनेशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, कंबोडिया के साथ पूरा बिजनेस करना चाहते हैं। कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे नेपाल एक ऐसा कंट्री है, भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पोर्ट नहीं है, तो इनलैंड वाटरवेज के साथ जब उनके हम सामान को ले जाएंगे तो वो बिलिंग जो है वो महत्वपूर्ण होगा कि ये मेड इन नेपाल है, मेड इन भूटान है, और इस तरह से कई एक कंट्री में जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, लोग उसको, जैसे बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल सेक्टर में आपको पता है कि 10% कंसेशन है, इसीलिए हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। केवल अंत में सभापति महोदय, इस सदन में चोला बंद से लेके लैंग्वेज के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। ये देश संविधान से चलता है, आर्टिकल 343 से लेके 348 तक। नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, बातचीत करने का लैंग्वेज क्या होगा, तमिल की क्या स्थिति होगी, हिंदी की क्या स्थिति होगी, अंग्रेजी की क्या स्थिति होगी, इस देश में पहले से निर्धारित है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि डीएमके चुनाव हारने के डर से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर कभी भी लैंग्वेज की बात नहीं करे और सेंटिमेंट को खत्म नहीं करे, क्योंकि आर्टिकल 15 में किसी भी कास्ट पे, रिलीजन पर, रेस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, और संविधान को यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को डीएमके खत्म करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी में जब तक मोदी जी की सरकार है हम उसको खत्म नहीं करने देंगे, हम मुकाबला करेंगे। Try it. Coming elections, use that as the plank. Use that as the plank in 2026 elections. Try it and see if you can. Supriya Sule, please. Thank you, sir. I stand here in support of this bill. My colleague from the Treasury bench, I think, has not heard the earlier speeches. Most speakers who have spoken since the debate has started have specifically supported the bill. So I think it's an illusionary information that he has spoken on that people are objecting to this bill. I think Sonwalji in his opening line has made it very, very clear from what he has explained in the bill that he is not making any drastic changes in the bill. It is just renewing, changing of name and that and the year, and there has not been much changes is what he has said in the bill when he opened his speech. So my colleague and friend Nishikant Dubeji was under an illusion that the entire opposition is in a very combative mode against this bill. Let me with full humility say that the entire opposition with full humility has always in support of this bill, because we understand that this is not some great policy change that they have done in this. Well, was there opportunity to do it? Of course there is. There is always an opportunity to improve. But I would like to ask specific questions, since it came from the Treasury bench, that they have said they have made it far more transparent than it was. I would like to ask the Honourable Minister in his reply to explain to us the comparison of earlier it wasn't transparent and today it is transparent. Like a small example they gave, that if it's one of the countries you don't want to work with,
or you don't have trade with, and the goods from that country come to our country, the country of origin would always be known, and then we can take a decision. So since this is a very serious policy comment that has come from the Treasury bench, I would seek a clarification from the Honourable Minister of what is the status before and what it is today. Well, in this maritime trade that we are talking and maritime commerce, well, India, in this entire global trade, we have a large seashore. And from the states where you come from, Tamil Nadu, where I come from, Plain Chandraji comes from, we have a big coast. And we have been, over the years, we have all tried to develop all our ports to generate more trade and more jobs for all our people. Well, given the economy of the country today, the rupee where it stands today, imports is something that this government should be very, very concerned about. As long as we are exporting, we are in a very good position. But I'm not sure what really of levels of trade are we doing right now. I would like to bring a small thing to the Honourable Ministers. Many points have made that there are new provisions which will to make ease of doing business. Now, ease of doing business actually was a global bank word. That ease of business has even stopped. So their government is still using it selectively. When it suits us, they say it's ease of doing business, we have done better, and there are some days they say, oh, it doesn't even matter whether we are a part of ease of doing business. But I would like to ask that, is there an appeal authority? Suppose now they have made this change, what he's saying is being very transparent. Any bill when you bring in, there have to be checks and balances, sir. I want to ask, because there is a comment in the statement of objectives, number 3 point, they said, the new provision is proposed to be incorporated to empower the central government to issue directions to carry out provision of proposed legislation. What Mr. Dubey said about minor and major ports, I agree with him completely. These are two completely different projects of state and country, cooperative federalism, nobody interferes in each other. But when you go into international waters, clearly central government takes over. I mean, every government is aware of that. And in cooperative federalism, I want to understand how have you empowered yourself further? So what is the difference? Because in your opening, there was not much of difference brought in. So how are you empowering yourself? Then are you, what worries me is most decisions this government has taken has actually stopped cooperative federalism, like from universities. In the education university, so much control from this government has started interfering into the states. So my first concern is that are you taking away power again under some surreptitious way from the states? So that's my concern. And I would like to ask the Honourable Minister one question, that in this you have said that there's an appealing authority. Now, in this appealing authority, who will be this appealing authority because of the specific word that they are empowering themselves? So now, suppose I will give you an example which has come in the newspaper, sir, I can authenticate it. There was a company which from Visakhapatnam which was importing shrimp feed from Brazil. So it was coming from Brazil into India. It came to Visakhapatnam, it landed with all the proper papers, and this has come in the newspaper, I can easily authenticate it. And Interpol told the government that there were drugs on this ship. Now, the authority obviously seized it. After seizing, the company got a notice. For 9 months, this which is an Indian company, was battling the Brazilian company and the Indian company. Both companies were willing to go through any tests, they had opened their offices completely, and they had denied everything and were willing to open any inquiry. After full 9 months, the government realized and gave them a clean chit. Now, it's international company in Brazil, an Indian company importing shrimp, what is it called? Shrimp feed. Now, 9 months, this company got affected. They had to pay huge tariffs because it was just parked there for 9 months, and their business collapsed for 9 full months. Look, if they're a large organization, maybe can afford it. But small businesses who are trying to make India proud, Atmanirbhar Bharat, we're trying to do so many things to work betterment with other countries. What intervention will your government do in a time-bound manner? 9 months is a long period for that company. So how can you help or intervene? What is in this, is there anything like goods or damages? When goods get damaged, who will take ownership of it? Government is going to put their hands up and said, oh, the Interpol has told us, so we can't do anything about it. So can we have a time-bound manner
Can we have, there's so much technology available now. So can we have a quasi-judicial system here in a time-bound manner so that anybody who has such challenges, it could even be real. Like Mr. Dubey said, so many drugs are coming into India. My God, it's actually alarming. And I think this whole House should together do something for this fight against drugs unanimously. So what would you do? Because most drugs are not made in India, they're imported. So what are you doing in this bill to stop any drugs entering from India? I think that's what we expect from this Honorable Minister. So can you tell us, or even these things that are happening in the dark net? Mr. Dubey said that the e-billing is not something that is practical or it's been done. My question to the government is so much, which even Mr. Premchandran said, with so much technology coming in, which you can call it a disruption or you can call it to help us. What technology, could have we not used more technology in this leading bill? So can you specifically tell us how you're going to protect the Indian businessmen in this? Because this bill has to be for our Indian people. So I urge you to seriously consider, if required, you can take all this feedback, strengthen the bill. We support it even in the case it is. But we hope that you will protect every Indian businessman because he or she or that company is India's pride. Like you said, you are proud about India. We are proud about every enterprising businessman in India who's trying to create and generate wealth and opportunity for Indians. So I hope in this entire international game, no Indian gets compromised in the future, and you will take up ownership and lead from the front for the Indian businessmen who are helping maritime commerce. Thank you. Thank you. Sri Anil Desai. Thank you. Thank you, Chair. Sir, I've gone through the Indian Bills of Lading Act 1856 now, which has been changed to Indian Bills of Lading 2024. And as has been said by earlier speakers, that pro and cons of the bill, but I think there is hardly anything to speak against the bill, whatever the contents of the new bill is there, except for few facts. I would like to ask the Honourable Minister regarding very first point that central government, like Section 5, central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any provisions of this Act. Now, central government has been there in the Act as it is legislated in the Parliament, and what is that specific Act or provisions where central government will come or put intervention or play a role that needs to be specified. I think Honourable Minister is giving his attention here. Sir, another thing that the speech which was made by Honourable Nishikant Dubeji, that he came out with a lot of knowledge it given to or enlightened the House, I would say. That bill of lading, what it was earlier, how the contract went, and how the improvisations have come, and how specific the best to everyone, like shipper, the ship owner, and the consignee. Now, what are those provisions which he has said? Can Minister elucidate them while answering? Bill of lading, as it was there in the colonial times, it is a contract between the freight shipper